Now we will read about the classification of chromosome. Chromosome is based on the basis of the position of centromere, number of centromere, and shape of chromosome and function of chromosome. Okay, now position of centromere, on the basis of which it is divided into, if suppose this is the chromosome and the centromere lies in the middle such that both arm is equal in length, that is P is equal to Q. This is called metacentric. Example is human chromosome 1, 2 and 3, and it is supposed to be very preliminary chromosome, and it is found in the amphibian. Okay, now the second one is the submetacentric, in which the position of centromere is more towards the P side, such that the P is, here is the P and Q is equal, but here the centromere is towards the P side, that the P becomes somewhat shorter and the Q is more lengthier. Here is the P is equal to Q, as P less than Q, and most of the human chromosome is of this type. Now third one is the acrocentric, in which the centromere lies more towards the end, such that the P is very, very less in length than the Q. This is called acrocentric, and in human being it is 13, 14, 15, 21 and 22. This type of chromosome is also known as sat chromosome, because it contains satellite. Okay, suppose this part is supposed to be the satellite, looks like satellite, that's why this is called satellite chromosome. And it is also known for the Robertsonian translocation. And acrocentric, it is found in the grasshoppers. Okay, and this much of the human chromosome, as well as the Y is also acrocentric. Now coming to the telocentric, in which the centromere lies at one end. Okay, there is no PR, or you can say very, very less, that it is not visible, and it is not found in the human chromosome. And in the house mouse, all the chromosomes are telocentric. Okay, now coming to the, according to the number of centromere, it is monocentric, that centromere where it does not depend on where it lies, but its number is 1. And dicentric, the most of the chromosome, all the human chromosome is monocentric. Now dicentric, in which there are 2 centromere, one is this and one is this. This now, another one is polycentric, in which there is many centromere. Okay, and another one is acentric, that there is
no centromere, and it is not visible, not not commonly seen. And dicentric is found in the wheat. ये लग रहा है ना जैसे कि वीट का दाना है, गेहूं का दाना की तरह थोड़ा थोड़ा दिख रहा है. एंड राउंड वोम, इसका एग्जाम्पल हो गया पॉलीसेंट्रिक का राउंड वोम. ये कुछ राउंड वोम की तरह दिख भी रहा है, ठीक है ना, राउंड वोम. और ये ऐसा नॉर्मली मिलता नहीं है. ओके, अब शेप ऑफ द क्रोमोसोम. शेप ऑफ द क्रोमोसोम के आधार पे हो गया आई शेप्ड, द टेलोसेंट्रिक, in which the centromere lies at one end. This looks like rod, so rod shaped. Example is telocentric. Now second one is J shaped. J shaped. This is of acrocentric chromosome at the phase of metaphase. When the chromosome is in condensed phase, then the picture of will look like this. Okay, the rod like, and the J shaped, this is acrocentric. And when it is L shaped, J shaped, and this L shaped, that is example is submetacentric chromosome. And when it is V shaped in metaphase, then it is metacentric. So metacentric, L shape, submetacentric, J shape, acrocentric, and rod shape, telocentric. Okay, now according to the function of chromosome, it is divided into autosome and the sex chromosome. When the chromosome entitled to govern the function of the body parts and their function, related to, committed to make protein for that, the body parts and the function, then it is called autosome. And sex chromosome, when it is linked to the sex, but also there are many things which is governed by, but the sex chromosome, which lies in the SRY gene of the Y chromosome. Okay, so sex is determined by the sex chromosome, and the rest of the body function are governed by autosome. So according to the function, it is of two types. Now the most accepted theory for the classification of chromosome is the Denver's classification. Denver classification, in which the basis is the position of the centromere and the size of the centromere. Okay, so on this basis, the chromosomes are divided on 7 groups, and the group are according to the capital alphabet, that is the group A, B, C, D, E, F, and G. Okay, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 group. And A is masa samosa. Masa samosa. इसमें समझा जाए कि एक समोसा वाला है जो दिन रात यहाँ पे ऐसे कढ़ाई है, यहाँ आग है, यहाँ पे समोसा तलता रहता है बैठ के, चनौटा से समोसा तलता रहता है दिन रात. इसको एक बहुत बड़ा मस्सा है यहाँ पे, तो यही याद रखना है. पहले तो मस्सा आ रहा है ना, उसके नीचे समोसा है, मस्सा समोसा. एक ऐसे नहीं है, 2 ऐसे, मस्सा समोसा. तो ग्रुप ए में होता है मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम, ग्रुप बी सबमेटासेंट्रिक, ग्रुप सी सबमेटासेंट्रिक, ग्रुप डी एक्रोसेंट्रिक, ग्रुप ई सबमेटासेंट्रिक, ग्रुप एफ मेटासेंट्रिक और सबमेटासेंट्रिक, ग्रुप जी एक्रोसेंट्रिक. ठीक है. और इसमें चूँकि कार्योटाइप जो होता है वो डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ
लेंथ पे डिपेंड करता है। जैसे कि क्रोमोसोम नंबर 1 जो होता है वो सबसे बड़ा होता है, और क्रोमोसोम नंबर 22 जो होता है ऑटोसोम को जो अरेंज किया वो सबसे छोटा होता है। तो ये ऊपर वाला तो सबसे लंबा होगा, लॉन्ग, और ये हो गया मीडियम, ये हो गया मीडियम, और सबसे नीचे वाला तो सबसे शॉर्ट होगा, और ये भी शॉर्ट होगा। बचा एक, तो ये मीडियम भी हो सकता है और शॉर्ट भी हो सकता है। तो ये लेंथ के आधार पे हो गया, और ये हो गया पोजीशन ऑफ द सेंट्रोमेयर के आधार पे। अब इसका एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं। तो हो गया 1 2 3, पहले में 3 आया, उसके बाद 2 आएगा, 4, अब 5। ठीक है, पहला खेप में 3 समोसा बना है, दूसरा खेप में 2 समोसा बनाया, और उसके बाद सोचा कि बहुत एकदम देरी लग रहा है, जल्दी जल्दी बनाना चाहिए, तो 6 to 12, तीसरा खेप में 12 समोसा, 1 दर्जन निकाल दिया। गाहकी बढ़ने लगा तो 6 to 12 समोसा निकाल दिया एक बार में। समोसा तो लेडीज़ को बहुत पसंद है, तो फटाक से एक्स क्रोमोसोम भी इसी में आ गया। तो उसके बाद फिर हुआ कि नहीं, क्वालिटी घटने लग गया, अच्छा समोसा नहीं बन रहा था, तो फिर से 3 में आ गया। तो यहाँ तो 12 तक हो चुका है, 13 14 एंड 15। ठीक है, 13 14 15, ये देखना है कि हाँ ये एक्रोसेंट्रिक होता है। ये सब जो है ये लेंथ है, लॉन्ग मीडियम लेंथ का, शॉर्ट लेंथ का। ठीक है ना, और 13 14 15 हो गया, फिर यहाँ पे हो गया 16 17 18, 3 3, और उसके बाद हुआ कि नहीं उतना, अभी भी उतना अच्छा नहीं बन रहा है, तो 2 2 कर दिया, 19 20 21 एंड 22। और फिर हर एक चीज़ में तो जेंट्स को देर हो ही जाता है, तो वाई क्रोमोसोम यहाँ पे आया है। ठीक है, सो दिस इज़ द डेनवर्स क्लासिफिकेशन। सो दिस इज होल all about the classification of different classification chromosome. Thank you.